Good morning children. Welcome once again. And today we will continue the fourth chapter, that is sorting materials into groups. And today we will discuss about the topic classification. So what is classification? To understand classification, let's take some things around us. कुछ चीजें जो हमारे चारों ओर हैं उसके कुछ नाम मैंने लिखा है, जैसे plants, cats, dogs and these and so on. Okay children, and if I tell you to divide all these things into living and non-living, what will you do? You will make two groups, living and non-living, and put all these living items into living group. Now I have made a group living and second group non-living. Non-living. Okay children? What will we do? We will put all the living items, all the living things into this group, like plants, cats, dogs. These are non-living. Chairs. We will put chairs in non-living group. Chairs, tables, bed, spoon, glass, and likewise we will put all the living things into living group and non-living things into non-living things. If I tell you to divide all these things on the basis of material from which they are made, then again we will make some groups like cells. The things made from cells, we will put things which are made from cells in this group, like plants, cats, dogs, or insects, birds. These are living things and these are made of cells. So we will put plants, cats and so on. Then tables, beds, doors, bats are made from wood. Now we will make another group which are made from wood. And we will put all the items which are made from wood. इसमें वो सारी items को रख देंगे जो wood का बना होता है. Similarly, जो steel से बना होता है इसमें उस item को रखेंगे. प्लास्टिक से जो बना होता है उसको उस group में रखेंगे. So हम लोगों ने क्या किया? We have divided all these things on the basis of some common properties, and this is what the classification is all about. ये इसी को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं. तो व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर क्वालिटीज. एक सिमिलर क्वालिटीज के आधार पर हम जो ग्रुप बनाते हैं उसी को क्लासिफिकेशन कहते हैं. लेट्स रिकंसिडर दिस ग्रुप. इस ग्रुप को हम फिर से कंसिडर करते हैं. Living groups, living items, living group जो है इसको हम लोग further divide कर सकते हैं. We can further divide living things into two groups. First, animals, and second, plants. So first of all we have divided the things into living and non-living. Further we have divided living things into two subgroups, that is animals and second is plants. It can be further divided into subgroups like insects, fish, amphibians, reptiles, birds,
divided these animals into subgroups like insects, fish, amphibians, reptiles, birds and mammals. Again, these plants can also be divided into subgroups. And in group of insect we have kept all the animals which have 6 legs. So जितने भी ग्रुप्स बने हैं उसके जो एनिमल्स होंगे उसमें कुछ ना कुछ कॉमन क्वालिटीज होगी और उस ग्रुप के एक एनिमल को पढ़ करके एक एनिमल के बारे में जान करके उस ग्रुप के सारे एनिमल्स के कॉमन क्वालिटीज को हम लोग जान सकते हैं. सो क्लासिफिकेशन इज वेरी यूजफुल टू अस. हम लोगों के लिए काफी यूजफुल होता है. इट मेक्स द वर्क इजी. इट मेक्स द स्टडीइंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स मच इजियर. वह किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज के जानने में हमारी बहुत मदद करती है. सपोज चिल्ड्रन यू गो टू लाइब्रेरी. आप लाइब्रेरी जाते हो एंड इफ यू हैव टू सर्च अ बुक ऑफ साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 6 एंड बुक्स इन द लाइब्रेरी आर नॉट अरेंज्ड. लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज नहीं है, सब इधर 6 के 7 के 8 के सारे सब्जेक्ट के मिले हुए बुक हैं, तो हाउ मच डिफिकल्ट इट विल बी फॉर यू टू सर्च दैट बुक. तुम्हारे लिए वो बुक को सर्च करना कितना डिफिकल्ट होगा. बट व्हेन बुक्स आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, देन यू विल गो डायरेक्टली टू दैट सेल्फ एंड टेक आउट द बुक यू नीड. जो तुम्हें बुक की जरूरत होगी वो डायरेक्टली निकालोगे. तो कितने समय की बचत हुई, बहुत समय की भी बचत हुई और काफी आसान भी हो गया. इसी प्रकार से चिल्ड्रन व्हेन यू एंटर इनटू किचन में जब एंटर करते हो एंड थिंग्स आर अरेंज्ड इन अ haphazard मैनर, किसी कहीं बर्तन रखा है, कहीं मसाला रखा है, एंड व्हेन यू नीड अ turmeric powder, pepper powder, then you will find very difficult. You will find it very difficult in searching that item. But when spices are arranged in a separate shelf, utensils are arranged in separate shelves, likewise everything arranged in a proper manner, then you will have no problem in getting anything. And we have seen how classification makes our work faster and easier. Now we will discuss about the properties of materials. Properties of materials. Properties of materials. What are properties? Children, if I tell you to describe this board, how will you describe? इसको कैसे describe करोगे? You will describe like you will say that this board is white in color. It is made up of wood. It feels hard. It does not smell. It is very big. So shape, it is rectangular in shape. So shape, size, color, smoothness, hardness, smell. By telling the shape, size, color, smoothness, hardness, smell, you can describe an object. So these are the properties of materials, and on the basis of properties things can be classified. So children, in my next video we will discuss about some of the properties based on which materials can be classified. That's all. Thank you.